Myself, VR Kodkumbe, Chemistry Department, Sri Arulti College of Science, Akola. First of all, congratulates you and welcomes you in this video lecture. Guys, for everyone, 12th standard is very important, no doubt. But not only the 12th standard, 11th standard is also very important because 11th standard is the base of the 12th standard. इसीलिए आपको 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई भी अच्छे से ही करनी है. देन एंड देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुली डील विद द 12th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स और द कोर्स. इसीलिए आपको 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान रखना है. आप सबके पास 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक होगा. यदि आपके पास नहीं है तो आप उसे परचेस कीजिए. और इसके बाद आपके जो भी वीडियो लेक्चर्स होते रहेंगे, साथ साथ में आप उसके नोट्स भी निकालते रहिए. जब भी हम अपने खुद नोट्स या मेमोरी मैप्स निकालते हैं या फिर मेमोरी मैप्स बनाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन क्लियरिंग आवर कंसेप्ट्स एंड क्लियरिंग आवर मेमोरी. देयरफॉर ऑलवेज प्रिपेयर योर ओन नोट्स और योर ओन मेमोरी मैप. ओके, तो there are 16 chapters. There are 16 chapters in your textbook, and all these 16 chapters we are going to see one by one. But in this video lecture we are going to start our first chapter, some basic concepts of chemistry. We are going to start this chapter from this video lecture. Now one thing I am going to tell you, that some portion of this chapter is reduced. It is because of the pandemic situation. Some portion is reduced, and that is the nature of matter, laws of chemical combinations, metals, atoms, molecules, and the Dalton's atomic theory. This portion is reduced. From your chapter, and I am also going to post the reduced portion of the different chapters in your classroom. Afterward, you can also see the reduced portion of this different chapters. Therefore, students, we will go towards the chapter. Now, in the introductory part of this chapter, we are going to see what is chemistry. What is chemistry? We are going to see. The chemistry is the study of matter. Chemistry is nothing but the study of matter. तो आपको लगेगा matter क्या है? What is the matter? Then we can say that anything around us is the matter. Anything around us is the matter. Then we can say that air or the water or the soap or the pen, whatever your clothes, all these things around us are the matter. And to study all these things is the chemistry. That is to study of all the different things around us is the matter. And study करना है यानी कि हम क्या करते हैं? What do we study? That is, we just study the physical and the chemical properties of the matter. That is, we just study about the physical and chemical properties of the different things around us. That is, we can physical properties जब हम study करते तो what is mean by physical property? What is mean by physical properties? The physical properties are the measurable property of any substance or the any matter. Therefore, you can say that it is the weight or the volume or the boiling point we can measure or the melting point of any substance. These are the measurable physical properties of any substance. And these different we can take the boiling point of water. That is, we just see the physical property of that
substance or the water, or we can take the volume of water also, or anything. We can take the volume of any oil, or we can take the weight of any substance or sugar, or NaCl, that is the salt. These are the different chemical properties. We just deal with our these are the different physical properties we just deal our in our डे टू डे लाइफ. देयरफॉर कभी भी हम एखादे सब्सटेंस का और एखादे मैटर का जब स्टडी करते हैं, एखादा मैटर देखते हैं, उसका स्टडी करते हैं, तो इसका स्टडी करते हैं मीन्स उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं. तो व्हाट इज़ मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज़? तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो व्हेनेवर there is a change observed when a substance undergo a chemical change. Whenever we observe when a substance undergoes a chemical change, कौन सा भी substance chemical उसमें chemical change आ गया, तो we can say that the chemical, we can say that that is the we are observing the or studying the chemical property. Friends, आपने केक बनते हुए देखा होगा, बराबर है, या फिर अपने ब्रेड बनते हुए देखा है, या फिर अब जो इडली है, ढोकला है, ढोकला, ये सब जब आप देखते हैं, ये सब चेंजेस आप देखते हैं, तो ऑल दीज आर द चेंजेस, दीज आर द केमिकल चेंजेस इन आवर डे टू डे लाइफ. तो केक में हम मिल्क डालते हैं या फिर बेकिंग पाउडर डालते हैं, राइट. तो उसमें जब कुछ केमिकल चेंज आते हैं और बाद में फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिलता है. ब्रेड में भी सेम वही थिंग, ढोकला में भी हम इनो डालते हैं, दैट इज़ द सोडा, और या फिर हम इडली बनाते हैं. सब जो चीज़ें हैं इन आवर डे टू डे लाइफ, तो इसमें सब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं या फिर केमिकल चेंजेस देखते हैं. That is, we observe the chemical properties in all these substances, and when we study the physical and the chemical properties around us in the about the different substances around us, then we can say that we just deal with the chemistry. In our everyday life, we always deal with the chemistry. In our everyday life, we always deal with the chemistry, and therefore chemistry is really a mind blowing creativity. It's really a mind blowing creativity. क्योंकि जब हम कौन सा भी सोप बनता है, तो कौन सा भी सोप जब बनता है या साबुन जब भी बनता है, इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ केमिस्ट्री, इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ केमिस्ट्री. या फिर कोई भी कपड़े बनते हैं, क्लोथ्स, इट इज़ ऑल्सो ए क्रिएशन ऑफ केमिस्ट्री. या फिर जो कोई पेंट बनता है, इट इज़ ऑल्सो क्रिएशन ऑफ केमिस्ट्री. देयरफॉर वी कैन से दैट इन एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जब भी कोई पेस्ट बनता है, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ केमिस्ट्री. या फिर कोई भी कॉस्मेटिक जो हमको सुंदर बनाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए क्रिएटिविटी ऑफ केमिस्ट्री. और द मेडिसिन्स, जो भी कोई मेडिसिन्स है जो हमको हमेशा लगते रहते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो ए क्रिएटिविटी ऑफ केमिस्ट्री. और द फूड इज़ रियली अ नाइस एग्जाम्पल ऑफ creativity of chemistry. That is, we can make chapati from the wheat flour, or we can make a cake, or we can make a bread, or we can make a dhokla. All these are the creativity of the chemistry. That is, these food examples are the creativity due to the chemistry. Therefore, to avoid chemistry in our day to day life is just impossible. We cannot avoid the chemistry from our day to day life. It is really a very very important science in our day to day life. Thus there is a great scope of chemistry in our day to day life. आप जो भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो आप वीडियो लेक्चर एक तो मोबाइल से देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर आप एक तो मोबाइल से देख रहे हैं, या फिर यू मे अंडर गोइंग थ्रू द कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स के जो चिप्स है,
ओके तो चिप्स जो बनते हैं कंप्यूटर के, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड द सिलिकॉन, अगेन देर इज़ ए केमिस्ट्री। और या फिर जो हम इलेक्ट्रिसिटी अभी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज़ ऑल्सो ए electricity is also a creativity of chemistry, and therefore without chemistry we cannot live our life. Thus chemistry is very very important science in our day to day life. Therefore you cannot live a single moment without chemistry, because the air is the combination of different chemicals, or the water or the food. These are the different necessity of our life, and if we will not get all these things we cannot live. Therefore chemistry is very very important in our day to day life, or we cannot avoid the chemistry. Thus guys, now we are going to move towards the next point, that is the branches of chemistry. So there are main 5 branches of chemistry, main 5 branches of chemistry. तो जो chemistry के जो different 5 branches है, these are the first of all organic chemistry, next one is the inorganic chemistry, the next one is the physical chemistry, biochemistry and the analytical chemistry. These are the different 5 branches of chemistry. तो chemistry के जो 5 branches में first of all we will just move towards the organic chemistry. So what is organic chemistry? The simply it is said that the organic chemistry is the chemistry of carbon containing compound. It is the chemistry of carbon containing compound. तो जो भी सब्सटेंस में, मैटर में कार्बन है, जब उसका हम स्टडी करते हैं तो वी कैन से दैट वी आर स्टडिंग द organic chemistry. But there are some exceptions are also there. Suppose we will take the CO2 example. Here CO2 there is a carbon, but CO2 is not the organic in nature. CO2 is not organic in nature, CO2 is inorganic in nature. But most of the substances which contains carbon, that is we can say that oil or the paste or the paint, the petrol, diesel we use, or the carbohydrates, all these substances contains carbon as a main ingredient, and therefore the study of all these substances we can say that it comes under the organic chemistry. Now we just move towards the inorganic chemistry. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो सिंपली वन कैन से दैट द केमिस्ट्री विच इज़ नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर इट्स कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. द केमिस्ट्री विच इज़ नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर इट्स कॉल्ड एज ए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इसके अपन डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स हमने देखे. सपोज you will take the very simple example, water. So water is inorganic in nature, water is inorganic nature. Or we can say that the CO2, we have seen here the CO2 is not organic in nature since there is a carbon atom also, but it is inorganic in nature because it shows all the properties of the inorganic substances, therefore it is inorganic in nature. Or if we will take the example of NaCl, that is the salt we use in our day to day life, it is the inorganic in nature. Or you may know the substances NaOH or the H2SO4, all these substances are inorganic in nature. Therefore inorganic chemistry, therefore inorganic chemistry we can say that the chemistry that not organic in nature, or the study of the those substances which are not organic in nature, that comes under the inorganic chemistry. Now we will just go towards the physical chemistry. तो physical chemistry क्या है? तो जो भी different principles है chemistry के,
डिफरेंट प्रिंसिपल्स है केमिस्ट्री के, या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री के, या डिफरेंट लॉज है केमिस्ट्री में. बॉयल्स लॉ यू हैव सीन, एवोगाड्रो लॉ यू हैव सीन इन द 10th स्टैंडर्ड. तो डिफरेंट जो लॉज है केमिस्ट्री के, और या फिर डिफरेंट कंसेप्ट है सच एज एनर्जी. यू ऑल्सो नो अबाउट द एनर्जी और द फोर्स और द टाइम एक्सेट्रा. तो इन सब का स्टडी जिसमें आता है दैट कम्स अंडर द फिजिकल केमिस्ट्री. दैट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट लॉज और द डिफरेंट कंसेप्ट सच एज एनर्जी, फोर्स, टाइम. ये सब जो है ये कम्स अंडर द फिजिकल केमिस्ट्री. तो these are the different branches of the. now we'll just go towards the बायोकेमिस्ट्री. तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो बायोकेमिस्ट्री जो आपने अभी तक आप द 10th स्टैंडर्ड तक इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको इसके बाद में बायोकेमिस्ट्री के बारे में मालूम होता रहेगा. तो हम जब वी जस्ट लिव, व्हेनेवर वी लिव वी जस्ट inhale air. okay, we just inhale air. तो जब हम एयर अंदर लेते दैट इज़ वी इनटेक द इनहेल ऑक्सीजन एंड वी जस्ट एक्सेल CO2. तो जब भी हम कुछ फूड खाते हैं, वी जस्ट व्हेन ईट सम फूड, या फिर कुछ भी फूड हमारे बॉडी में अंदर जाके डिफरेंट जो एंजाइम्स है उसमें कन्वर्ट होता है. डिफरेंट एंजाइम्स में ये फूड कन्वर्ट होता है. तो वहाँ पे क्या होता है, सम केमिकल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस व्हेन वी इनहेल O2 दैट इज़ द ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल द CO2. इसका मतलब यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज हो गए, इसीलिए ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड टू द कार्बन डाइऑक्साइड. और जो फूड के डिफरेंट एंजाइम्स, फूड या डिफरेंट एंजाइम्स में अपना फूड कन्वर्ट होता है, तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट एंजाइम्स में कन्वर्ट होता रहता है. तो दीज आर द डिफरेंट केमिकल चेंजेस टेक प्लेस इन द इन अस, और वी कैन से दैट इन द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. कौन सा भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर जो भी कुछ चेंजेस होते रहते हैं, और दैट केमिकल चेंजेस होते रहते, दैट comes under the biochemistry. That is, we can say that biochemistry explores about the chemical processes in the living organism within us and the living organism. Thus biochemistry is also very important science regarding our day to day life. Then we just go towards the analytical chemistry. Now this analytical chemistry is also new for you. Analytical chemistry is also new for you because अभी तक आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में सुना नहीं है, लेकिन इसके बाद आपके जो टेक्स्ट बुक में अलग अलग चैप्टर्स है उसमें आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री आ जाएगा. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? तो इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री इट इज़ देयर इज़ अ analysis of substances. Analysis of substances means क्या? तो it is the separation. Analysis means separation. We just separate out the substances. Suppose NaCl is there. Okay, NaCl is there. Now this NaCl is made up of Na positive ion and the Cl negative ion, or we can say that NaOH, Na positive ion, OH negative ion. There are number of substances which are made up of the number of matters in our day to day life which are made up of the combination of more than two or the different substances come together and one of the matter is obtained. But when we separate out these substances, then we can say that we are analyzing the substances, or we can also say that whenever we can find out कौन सा भी सॉल्ट है तो उसमें क्या क्या है. अभी NaOH is also a salt or the NaCl is also a salt, but whenever you will get a salt you don't know whether it is NaCl or it is NaOH. Therefore after analysis we can say that it is a NaCl which contains the Cl negative ion and the Na positive ion. तो वहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है.
और एनालिटिकल केमिस्ट्री also deals with the different apparatus used for the different chemical जो changes है उसमें जो different apparatus यूज होते हैं it comes under the analytical chemistry. तो analytical chemistry is industrially very important chemistry. Industrially analytical chemistry is very important. Thus these are the different five branches of chemistry. That is, we can say that these are the main branches of chemistry. We can say that it is the organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, biochemistry and the analytical chemistry. Thus these are the different five branches of chemistry. Now in this video lectures we have seen the different things. First of all, we have seen what is chemistry. We have seen the chemistry, what is chemistry. In that we also have seen the what is matter. Again, regarding the matter, there are the physical properties and the chemical properties. We have seen the physical properties and the chemical properties of the matter, and again we have also seen about the scope of chemistry. We also have seen the scope of chemistry in our day-to-day life, and we also have seen that chemistry is really very important, or it plays a vital role in our day-to-day life. Okay. उसके बाद हमने देखा है different branches of chemistry. Okay. We have seen the different branches of chemistry. In that we have seen the organic chemistry, we have seen the inorganic chemistry, we have seen the physical chemistry, we have seen biochemistry, and we have seen analytical chemistry. So guys, यहाँ तक ये हमने डिफरेंट ये जो कुछ देखा है, तो आप घर जाके तो आप तो घर पे ही हो, तो इसके बाद आपको एक करना है कि आपका जो टेक्स्ट बुक है और ये वीडियो लेक्चर देख के आप आपके खुद अलग से नोट्स निकाल सकते हैं, और मेरा एक कहना है कि आपने आपके खुद के नोट्स निकालने चाहिए. सही बात है. तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. तब तक के लिए बाय.